Assalamu alaikum everyone, I hope you're all doing great. Welcome to your favorite physics channel, College Physics. Here you will find work solutions to past papers by excellent teachers and A-star students. So please subscribe to our channel and forward it to other Cambridge learners. Thank you. Okay, so we're starting off with paper 4. This is variant 42, October-November 2019. Okay, question number 1. Figure 1.1 is a top view of a rectangular paddling pool of constant depth. The pool is filled with seawater. The volume of the seawater in the pool is 264 meter cube. Calculate the depth of the pool. ठीक है, हमें इस पूल की वॉल्यूम दी हुई है, हमें इस पूल की लेंथ दी हुई है, लेंथ का ये लेंथ है, हमें इस पूल की विड्थ दी हुई है, लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है, वॉल्यूम दी हुई है, तो डेप्थ तो निकाल ही सकते हैं. डेप्थ का क्या मतलब होता है? हाइट. ठीक है, तो वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है? वॉल्यूम हमारे पास होता है कि आपका जो एरिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 20 मल्टीप्लाइड बाय 44, एग्जांपल यहाँ पर 20 मल्टीप्लाइड बाय 44, हमें इसका एरिया मिल जाएगा. तो अगर हम एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे बाय द डेप्थ, जो इसकी हाइट है बेसिकली, क्योंकि ये इस तरह होगा ना, पूल अंदर से तो ऐसा लग रहा होगा, तो इसकी जो ये हाइट होगी, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय दिस एरिया, तो हमें पूरे क्यूब की वॉल्यूम मिल जाएगी, मतलब जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है. ठीक है, तो वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय एरिया. ठीक है, तो अगर हमें डेप्थ ढूंढनी है तो हम करेंगे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया. तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है? 264, और एरिया हमारे पास क्या है? एरिया है 44 मल्टीप्लाइड बाय 20. तो अगर आप ये टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.30 मीटर्स. अगर आप 0.3 मीटर्स भी लिख दे तो मसला नहीं है, आपको 3 मार्क मिलेंगे, एक आपके आंसर के, ठीक है, एक इस फॉर्मूला के, और एक ये कैलकुलेशन के. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पेज. बी, द मास ऑफ द सी वाटर इन द पूल इज 2.7 into 10 to the power 5 kg. ये मास है. Calculate the density. Give your answer to 3 significant figures. अब अगर यहाँ पर बोला हुआ है कि इतने significant figures चाहिए, तो फिर आपको इतने significant figures ही देने पड़ेंगे. यूजली जैसे फॉर एग्जांपल ये दूसरा पेज है, यहाँ पर अगर हमारे पास, जैसे यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर वैल्यूज़ देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 3 सिग्निफिकेंट, तभी मैंने आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे हैं. आप चाहते हैं तो आप 0.3 भी लिख सकते हैं, तो मसला नहीं, बट बेहतर है कि आपने 0.30 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह 3SF है, तो हमने आंसर में भी 3SF ही दिया है. अब लेकिन यहाँ पर तो हमें स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि हमें 3SF देना है, तो हमें 3SF ही देना है. दूसरे वाले में हम 2SF भी लिख सकते थे. ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास हमारे पास है 2.7 into 10 to the power 5, और वॉल्यूम पीछे क्या थी हमारे पास? वॉल्यूम थी 264 थी ना, हाँ 264 थी. तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा हमारे पास अराउंड 1020 kg per meter cube. ये यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है, इन केस यू डोंट नो. एंड यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा. ऑब्वियसली 1 मार्क हमारा वर्किंग का होगा, सॉरी 1 मार्क हमारा फॉर्मूला का है, और दूसरा मार्क हमारे आंसर का है. फिर बोला हुआ है कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू द सी वाटर एट द बॉटम ऑफ द पूल. अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू रॉ GH. ये सी वाटर का प्रेशर होता है. तो डेंसिटी हमारे पास ऑलरेडी है. डेंसिटी क्या है? 1020 मल्टीप्लाइड बाय जी. क्या होता है? ऑब्वियसली हम 10 लेंगे जी को, और हाइट हमने पीछे ही निकाली थी 0.3, तो 0.3. तो इसका आंसर यहाँ पर आ रहा है अराउंड 3100 पास्कल. ठीक है, आपको पता है प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल. State a suitable instrument for measuring the dimensions given in figure 1.1. अब okay, let's go to figure 1.1. The dimensions that are given are basically the length, the width. What is a suitable instrument for measuring these? अब ये
what are the width and length? We have 20 meters and we have 40 meters. It's not really a small value. It's ठीक है, अगर ये बड़ी वैल्यू है वो भी मीटर्स में, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम मीटर रूल तो यूज़ नहीं कर सकते, हम बेसिकली टेप यूज़ करेंगे, मेजरिंग टेप. ठीक है, तो आप लिखें a measuring tape. Sorry, measuring tape. Okay, we're done with that question. Question number 2. State 2 conditions which must be true for an object to be in equilibrium. What is it when an object is in equilibrium? It's the fact that there are no resultant forces on it. जब किसी चीज़ के ऊपर resultant force नहीं होती, it does not accelerate. Therefore, it is either moving in constant velocity or it is not moving at all. This is Newton's first and second law, which describes equilibrium. The first law is the law जो basically बताता है कि equilibrium में क्या होता है. That is when an object is either moving in constant velocity or it has zero speed as there is no resultant force applied on it. So that's exactly what we're gonna write down, that the first condition is that there's no resultant force on the object. And what's the second thing? Is that there's no resultant momentum या turning effect. ठीक है, moment अगर constant हो, there's no resultant moment and there's no resultant force. These are the two conditions which depict an object to be in equilibrium. So that's exactly what we're going to write down. No resultant momentum. ये तो फिर torque. Because both of these formulas, for example, force and momentum, they include velocity. When velocity is constant or zero, then there's no resultant force and then there's no resultant momentum. Okay? And velocity obviously has to be either constant or zero for equilibrium to exist. B. Figure 2.1 shows a uniform meter ruler PQ in equilibrium. The distance PQ is 100 centimeters. So, okay, let's just first have a look at this diagram. We have a meter ruler, we have a pivot which is placed at the 10 centimeter mark, I guess. Then from P to Q is obviously 1 meter. And the distance PQ is 100 centimeters, which is 1 meter. The mass of the meter ruler is 0.12 kg and its weight is W. On figure 2.1, draw and label. Let's see what we have to draw and label. 1. An arrow with force W acting on PQ at the center of the mass. Now, where is the center of the mass? The center of the mass will be exactly at the center of the object, which over here is 50 centimeters. How do I know that this is 50 centimeters? Because we have 40 and then we have 0. Add both of these and you get 50 centimeters right here, where the 40 centimeter mark is ending. So we're going to have to draw an arrow to show the force W acting on the PQ at the center of the mass, which is here. So I'm going to draw it downwards because obviously weight is downwards, and this is W. Next, 2. An arrow to show the force R acting on PQ at the pivot. Where is the pivot? This is the pivot. The force, an arrow to show the force R acting on PQ at the pivot. What is R going to be? R is going to act the force which is acting on the pivot. So obviously it's going to act upwards. So I'm going to draw it here. This is going to be R. Okay, by taking moments about the pivot, calculate F. Okay, so where's the pivot? Say, this is the pivot. If we take moments about it, we have to calculate F. So let's look at all the forces that are applied in this. Pehle to, we have F over here, which is an anti-clockwise moment because it's gonna pull the ruler this way, anti-clockwise. W is a clockwise moment and
P over here, this load over here, also produces an anticlockwise moment. So what we're going to do is all of anticlockwise moments are equal to clockwise moments, right? So that's what we're going to write down. First, what are the anticlockwise moments? We have, okay, this moment over here is anticlockwise. F is also anticlockwise, so this is also anticlockwise. And then what about the clockwise? Clockwise is W. So ये पूरा हो जाएगा clockwise. सही है? So I'm just going to write it down to make it easier for you guys to comprehend. So we're going to say all the anticlockwise moment is equals to sum of anticlockwise moments is equals to sum of clockwise moments. So sum of anticlockwise moments is equals to sum of clockwise moments. So which ones are anticlockwise? We have 0.5 multiplied by 10. This is our first moment. Plus, now F. What is the distance from the pivot to F? It's 90 centimeters because the entire ruler is composed of 100 centimeters. So 100 centimeters minus 10 centimeters will give us 90 centimeters. 90 multiplied by F, whatever that force is equal to, clockwise moment is just the force due to W, or the moment due to W. So it's going to be 40. Now what is W? We know that the mass is 1.2 kgs. Therefore the weight is equals to mass multiplied by G. W is equals to mg. So the mass is 1.2 kgs and G is 10. So W will be 1.2 newtons. So it's going to be 40 multiplied by 1.2 newtons. And once you simplify this, we get 90 F is equals to 43. And then we divide 43 by 90, and the answer for F is around 0.4777. So you just simplify it, or आप लिख दो 0.48. Say we get 4 marks for this. 1 mark is for the answer. Sorry. 1 mark is for this. 1 mark is for showing this entire equation. 1 mark is for expressing the statement. Actually, we get 2 marks for explaining this statement. You have to explain the fact. You have to express and show which are the correct moments. So, ये मैंने बहुत simplify करके लिखा है. You can write it as an extended version because इसके 2 marks हैं. But आप इस तरह भी लिख दो तो आपको 2 marks मिल जाएंगे. It's not really an issue. And then we're told to calculate R. And as we know that R is the opposite, it will be the opposite of basically W. And because you know, as per Newton's third law, upward forces are equals to downward forces, the same magnitude but opposite in direction. So since W is 1.2 newtons, R, which is the upward force for W, will also be 1.2 newtons. 1.2 newtons. You can write down the fact that R is a reaction force for W, or in simplified words, upward force is equals to downward force. Say? Okay, we're done with this question. Question number 3. Figure 3.1 shows a gas container in a cylinder enclosed by a piston. I'm so sorry. Describe in terms of moment of the molecules how a pressure is exerted on the walls of the cylinder. So I hope you all know this कि pressure किस तरह आता है. Pressure का reason यही होता है कि जो molecules अंदर होते हैं, which are basically enclosed by this piston over here inside of the cylinder, these molecules exert a force on the wall of the cylinder. That is what pressure is. That the molecules of the gas exert a force on the cylinder that causes pressure. And why is that? Because they collide with it. And these molecules collide with the walls,
they exert a pressure on it, a force on it. ठीक है. Molecules of the gas collide with the walls of the cylinder. Say. And obviously because of this, there is change of momentum. This causes change in momentum. As momentum में change क्यों होता है? Because मैं पता है कि for example if something is moving in this direction, ठीक है, इसकी momentum क्या होगा? mv. अब ये यहाँ पर this is the wall, it collides and then it moves backwards, तो इसकी momentum क्या हो जाएगी? m minus v, because the direction of velocity changes. As we know that these molecules they have an elastic collision. ये wall के साथ क्या करते हैं? This यहाँ पर जो collision हो रहा है ना, this is an elastic collision. मतलब क्या है? Kinetic energy तो constant है, लेकिन momentum changes because the direction changes. Direction change होगी तो क्या होगी? Velocity changes. Because आपको पता है कि speed direction पे depend नहीं करती, लेकिन velocity direction पे depend करती है. So when the direction changes, velocity changes because velocity is a vector. Therefore, when the molecules of the gas collide with the wall of the cylinder, it causes a change in momentum as the direction of motion changes. और इससे क्या होता है? Velocity changes. And we all know that the rate of change of momentum is force. Rate of change of momentum is force. Therefore what? A force or pressure is exerted on the walls of the cylinder. Okay? I hope you guys understood that. B. The piston is pushed into the cylinder. The volume decreases from 820 centimeter cube to 330 centimeter cube. Now what happens when the volume decreases? The pressure increases because it is a indirectly proportional relationship. ये कौन सा law है? Boyle's law. When temperature is constant, isothermal यहाँ पर लिखा हुआ है, temperature is constant when there's an isothermal condition and the pressure either decreases or increases, the opposite of that happens to the volume. So हमें क्या बोला हुआ है? The pressure obviously measures the pressure gauge measures the pressure after the compression. As after the compression के बाद नया pressure after the compression is 20 pascals. Calculate the value of the pressure before the gas was compressed. Say yeah. So what we're going to do, we're going to write down, obviously हमें initial pressure चाहिए, तो हम लिखेंगे P initial. आपको पता होना चाहिए what is it? P1 V1 is equals to P2 V2. ये आपका formula है यहाँ पे basically. So one second, let me just write it elsewhere. So P1 multiplied by what was the volume beforehand? It was 820 centimeter cubes is equals to, what is the new pressure? 20,000. 20,000 multiplied by 330. Therefore, the answer is 8,000 pascals. Okay, and we're done with this question. Question number 4. A student carries out an experiment to determine the thermal capacity of a metal block. The block is heated by an electric heater for 23 minutes. The current in the heater is 3 amperes at a potential difference of 12 volts. The temperature of the block rises from 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Calculate the thermal capacity of the block. Now, how are we supposed to calculate the thermal capacity? First, let's just see what values are given. Okay, first of all, we have
the time. The time that is heated for is 23 minutes. Second, the current. The current that moves through the heater is 3 amperes. Third, the potential difference is 12 volts. Then the temperature difference is from 20 to 70, so that is 50 degrees Celsius. Therefore, as you should all know this formula, P is equals to ET, power is equals to energy into time, and as we all know, sorry, मैंने उल्टा लिख दिया. P is equals to energy upon time, because the rate of change of energy gives us power, and therefore energy is equals to power into time. And what is another formula of power? P is equals to IV. So E is equals to IV into T. Say, so obviously we have I, which is 3, multiplied by voltage, which is 12, multiplied by time, which is 23 minutes, but we need it in seconds, so we're going to multiply 23 by 60. Divided. And the answer is around 50,000 joules. 50,000 joules. अब हमारे पास एनर्जी तो आ गई, लेकिन हमें यहाँ पे एनर्जी नहीं निकालनी, हमने निकालना है थर्मल कैपेसिटी. थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल, सॉरी ये मुझे पहले लिखना चाहिए था, C इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन change in temperature. Now we've already calculated the energy. This is the energy. Now we need to find the temperature difference, which I already found it beforehand, which is 50 degrees. Therefore finding thermal capacity is 50,000 divided by 50. Therefore your answer will be 990 joules per degrees Celsius. Do not forget to write the unit. Same. B. 2 metal spheres of different diameters are heated to 900 degrees in a hot oven. The 2 spheres are removed from the oven. State and explain any differences in the initial rates of emission of radiation of thermal energy between the 2 spheres. Okay, first of all, we're told beforehand that both of these metal spheres have a different diameter, and they're both heated to the same temperature in a hot oven. Now, what will be the difference in initial rates of emission? पहले तो, the largest sphere will emit more radiation or loses more thermal energy. Why? Because it has a greater surface area. जितना ज़्यादा surface area होगा, उतना ज़्यादा हमारे पास ability होगी for the heat to get lost. Okay? So we're going to write the largest sphere emits higher thermal radiation. And also the rate of emission of radiation will also be greater. So we're going to write this down. Now first we're going to write down that the largest sphere emits higher thermal energy as it has a larger surface area. This also causes a greater rate of emission of radiation. तो सिर्फ ये नहीं कि इनिशियली वो ज़्यादा थर्मल एनर्जी लूज़ करेगा, उसका रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी भी ज़्यादा होगा. रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी अपॉन टाइम. So it's losing a lot more energy than the smaller sphere, and it's losing it faster, if that makes sense. Say, question number 2. A hot sphere is now heated in a hotter oven. State and explain any effect on the rate of emission of radiation of thermal energy from that sphere when it is removed from a hotter oven. Because it's in a hotter oven, क्या होगा? Because it's in a hotter oven, इसमें उसका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा.
the temperature will be higher than 900 degrees Celsius. Therefore, the rate of radiation will be even greater. ठीक है? Rate of radiation removal, your thermal energy loss will be even greater. So that's what you can write. Greater loss of radiation. ये तो फिर thermal energy. Alongside greater rate of loss of thermal energy. देखें, मैं इस चीज़ को इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल you have, आप इमेजिन करें ना, a real life scenario, you have two things and one is hotter than the other. वो ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा और अब पहले तो अच्छा नहीं मैं आप कंफ्यूज करें. फॉर एग्जांपल हमारे पास आप ये एक चीज़ इमेजिन करें, हमारे पास दो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल सेम साइज़ है दोनों का, एक का टेम्परेचर दूसरे से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा it will release higher thermal energy initially ही, and the rate of loss of thermal energy will also be higher than the other. Then if we look at the scenario of two objects, one is larger than the other and they're both at the same temperature. Now the larger one has a higher surface area, so it loses more thermal energy initially and the rate of loss of thermal energy is higher than the other one, the one that's smaller. ठीक है? ये दोनों आपको समझ आ जाने चाहिए. We have two different scenarios. In one there's different sizes and same temperatures, and in the second one we have same sizes but different temperatures, if that makes sense. So we're done with this question. Question number 5. One difference between a longitudinal wave and a transverse wave is that a longitudinal wave consists of compression and refraction. इसका example क्या है? For example, sound. ठीक है? E.g. sound waves. Those are longitudinal waves. Explain the terms compression and refraction using ideas about particles. अब compression में क्या होता है? In compression we have a higher pressure. Therefore the particles are closer. Particles are closer. And refraction, the pressure is lesser. So particles are further apart. Say it. Describe one other way in which longitudinal wave motion differs from transverse wave motion. As you all know, that in longitudinal waves, the oscillations or the vibrations of the particles of the medium, they vibrate in the same direction as the direction of propagation of the wave. Let me draw it off for you. For example, ये हमारी वेव जा रही है, ठीक है? ये हमारी वेव जो वेव की एनर्जी है, that is the direction in which it moves, ठीक है? This is a wave's direction. And these are the particles that, let me just use another color. These are the particles that a wave is consisted of, ठीक है? I'm talking about longitudinal wave now. What will be their direction of propagation? This. Wait, sorry. Let me just use black. They will move back and forth. Can you see that their direction is parallel to the direction of the propagation of the wave? अगर wave right की तरफ जा रही है, तो ये right और left जा रहे हैं, मतलब इनकी movement parallel है wave की movement से, wave की direction से इनकी movement parallel है, हाँ कि नहीं? But if we're talking about transverse wave, take it for example, transverse wave, and this is the direction of propagation of the wave, right? And these are the particles. In this, the particles move what? The particles move up and down. Oopsies. The particles move up and down. Up kya? The particles' movement of direction is what to the direction of the propagation of the wave. It is perpendicular. 90 degrees आ रही है ना यहाँ पर.
जो पार्टिकल है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है एंड द वेव इज मूविंग टू द राइट और टू द लेफ्ट. I hope you guys understood that because I'm going to write it down in words now. So, for the longitudinal wave, what are we going to write? We're going to write that vibrations या तो फिर movement of the particles of the wave move या vibrate parallel to the direction of propagation of wave ठीक है. And for transverse, the vibrations or the movement of the particles of the wave vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave. Say? Okay, B. A sound wave of frequency 120 kilohertz travels through a rock at a speed of 3,500 meters per second. Calculate the wavelength of the wave. अब आपको ये formula बताना चाहिए. V is equals to F lambda. And we have to calculate the wavelength, so it's V upon F, which is 3,500 बताया हुआ हमें यहाँ पर speed है, और F है 0.12 multiplied by kilohertz है ना, so 10 to the power 3. Basically हो जाएगा 3,500 upon 120, and the answer will be 29 meters. Do not forget the unit. The wave travels from rock into air. State and explain whether this wave will be audible to a human ear. अब आपको पता है कि जब कोई wave है, whether it's energy, whether it's sound, whether it's anything, it's a wave, right? It's traveling from a more denser medium to a lesser denser medium, or from a lesser denser medium to more denser medium. It makes zero difference in the frequency, because the frequency, the source of the wave, is still the same. So the frequency remains unchanged. The wavelength and the speed changes, right? But makes no difference to the frequency. The frequency will still be what? 120 hertz. So will we be able to hear this? Yes, because the human hearing frequency is 20 hertz to 20,000 hertz, और ये उसके बीच में आता है. Therefore, the statement is that state and explain whether the wave will be audible to a human ear. Yes, it will be audible. And the reason क्या है इसका? कि the frequency doesn't change due to mediums. And आप ये भी लिख सकते हैं कि audible range is what? 20 hertz to 20,000 hertz. ठीक है? Done with this question. Question number 6. Figure 6.1 shows, let me just do this, yeah. Figure 6.1 shows an empty container and an observer's eye. There's a small coin at position O. The observer is unable to see the coin. ठीक है? The observer and the coin can stay in the same position and the container is filled with water. The observer can now see the coin. अब एक बात बताएं कि पहले तो ठीक है, आई यहाँ पर है तो ये आई के साथ लाइन नहीं कर रही, हमें नज़र आ रहा है दिस इज़ अ लाइन at which the light is reflecting off the coin and it's not caught by the eye. ठीक है, अगर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है कॉइन से, तो यहाँ पर आई नहीं है, तो आई देखेगी कॉइन को कैसे. हमें कोई भी चीज़ विजिबल होती है तो वो इस वजह से विजिबल होती है क्योंकि उससे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई कपड़े पहने हुए आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं बिकॉज उससे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है,
और जो कलर के वो नज़र आ रहे हैं वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। बाकी सारी लाइट्स उसके अलावा, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ वाइट है, नहीं कोई चीज़ रेड है, ठीक है, तो उस पर वाइट लाइट पड़ रही है लेकिन वो आपको रेड नज़र आ रही है, क्यों? क्योंकि रेड रिफ्लेक्ट हो रही है और उसके अलावा जितने भी कलर्स हैं, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वो सब अब्जॉर्ब कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हम उसमें पानी डालेंगे, वाई विल द कॉइन देन बी visible to the observer? That is because what? Because there will be a new medium. This medium is more denser than air and light will be refracted. That light will be refracted. For example, abhi to light यूं जा रही है, so if we have water here, right, the light will be refracted. It will move in this direction. Can you see? It's being refracted. Rather than moving here, it moves here. So that's exactly what we're going to write down. Light, ठीक है, light from water to air is refracted, and because it's moving to a lesser, denser medium, what happens? It bends away from the normal, ठीक है, refracts. Obviously air is lesser denser than water, refracts away from the normal and hits the retina in the eye, and then we can see it. State the name of the wave process which occurs as the light passes from water into the air. Even ऊपर भी लिखा हुआ है refraction. This was stupid, to be honest, क्योंकि ऊपर ही हमने refraction के बारे में बात की है. Next, explain why the image of the coin is a virtual image. It's a virtual image because it does not originate, the rays, they do not meet at the image. इसका ये reason होता है. Or they only appear from the image. या तो आप ये भी लिख सकते हैं, they cannot be seen on a white screen, ठीक है, जो भी आपकी मर्जी हो लिख सकते हैं. तो मैं बस लिख देती हूँ कि rays do not meet at image. State the speed of light in air. ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये light in air is also a electromagnetic wave. तो सारी electromagnetic waves की speed क्या होती है? 3.0 into 10 to the power 8 meters per second. The refractive index of water is 1.3. Calculate the speed of light in water. अभी आपको पता होना चाहिए कि refractive index का formula होता है speed of light in air upon speed of light in water, ठीक है. और हमारे पास speed of light in air क्या है, क्योंकि हमें बताया हुआ ना the refractive index of water is 1.3, तो यहाँ पे तभी हमारे पास air upon water आ रहा है, ठीक है. We have to calculate the speed of light in water. तो 1.3 is equals to speed of light in air क्या होता है? 3 into 10 to the power 8 upon, नहीं sorry मैंने गलत लिख दिया. Speed of light in water, right? So we have to do 3.0 into 10 to the power 8 upon 1.3 gives us speed of light in water, and the answer is 2.3 into 10 to the power 8 meters per second. Say, we're done with that question. Question number 7. Figure 7.1 shows a coil of wire wounded on a thin plastic cylinder. Plastic has no effect on any magnetic field. The galvanometer is extremely sensitive. A magnet is fixed on a small trolley that runs without friction on a track through the cylinder. The trolley is released from point A so that it runs through the coil from right to left. State and explain what is observed on the galvanometer. पहले आंसर लिखने से पहले let me just explain कि यहाँ पर हो क्या रहा है in my own words. Okay. यहाँ पर we have a metal coil and it's connected to a metal coil. It's connected to a galvanometer. What does the galvanometer show? It shows
when there is a current produced. ठीक है, अब अगर इस वायर के अंदर, ये जो वायर है पूरा, ये कॉइल बनी हुई है, इसके अंदर अगर करंट होगा देन द गैल्वेनोमीटर इट शिफ्ट्स, इट डिफ्लेक्ट्स. ठीक है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, जहाँ पर भी. ठीक है, अब this coil is not connected to any battery, it's not connected to any AC current. तो किस तरीके से, how will this coil have current in it? It will be induced current. Now, when is current induced in a coil? It is when the magnetic field that surrounds that coil is deflected. जब magnetic field deflect करती है, उसकी वजह से इसकी भी magnetic field deflect करेगी जो coil के अंदर है, and EMF produce होगा. उस EMF की वजह से current produce होगा, जो इस magnet को, या for example, let me just draw here, right? This magnet is being pushed towards the coil of wire, right? From north to south इसकी यूँ magnetic field है. ठीक है, north to south magnetic field है. सही. Now when this magnet moves towards the coil of wire, right, it deflects the magnetic field. This magnetic field deflects, it changes around the coil because the magnet is moving, obviously. Now the EMF that is produced in this coil of wire, it will produce a current that will push this magnet away. It wants to push this magnet away. Why? Because when this magnet is moving towards the coil, it produces EMF, and this EMF doesn't want to be produced because it's Lenz's law. ठीक है? So what it's going to do is it's going to produce south pole on this end of the coil to what? एक attraction होती है और एक क्या होती है? It's to push this magnet away. तो ये इसको क्या करेगा? इसको push करेगा, इसको repulse करेगा. It's going to cause repulsion. When south pole is produced on this end, it repulses the magnet away, which reduces the current produced in this coil due to the EMF. Sahi? I hope you guys understood it. It's a very interesting concept. और ये पास पर सॉल्व करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से एम्बेडेड होना चाहिए. मैं आपको 5 मिनट में नहीं समझा सकती, बट आई ट्राइड माई बेस्ट. आई एम सॉरी नोबडी अंडरस्टूड. एंड इस तरफ ऑब्वियसली नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो रही है जब द मैग्नेट इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल ऑफ वायर. ठीक है, एंड करंट प्रोड्यूस हो रहा है. So now we're going to write down our answer as simplified as possible. State and explain what is observed on the galvanometer. What is observed on the galvanometer? It deflects. Deflection. पहले तो हम ये लिखेंगे. Deflection on the galvanometer. And उसके बाद क्या होगा? क्योंकि जब एक second, let me just read this. The trolley is released from point A so that it runs through the coil from right to left. अब ये बात हो रही है कि when it comes here, right? When the trolley, it reaches here, then क्या होगा? Then it's moving away from the coil. When it's moving away from the coil, तो क्या होगा? यहाँ पर current की direction change हो जाएगी. Current की direction change होगी किस तरह? Let me just use another color. अब क्या हो रहा है? Because the magnet is moving away from the coil wants to pull it towards it. जब it was moving towards the coil wanted it away, so therefore it produces south pole. Remember? जब magnet coil के towards आ रहा था, coil को इसको अपने से दूर भेजना था, तभी उसने south pole produce किया repulsion से. यहाँ पे ताकि दोनों south pole हैं, तो repulsion के लिए इसने south pole produce किया. अब क्या हो रहा है कि magnet दूर जा रहा है, तो coil को उसको अपने पास बुलाना है. To this also would what? Reduced in effects to reduce the EMF produced in the coil. So अब क्या होगा? Because यहाँ north है और इसको अपने पास बुलाना है, तो यहाँ पर ये south pole produce करेगा और यहाँ पर north pole produce हो करेगा. समझ आ रही है आपको? So जब ट्रॉली यहाँ पर होगी तो अलग डायरेक्शन होगी करंट की, बिकॉज वो टुवर्ड्स द सिलेंडर जा रही है, और जब ट्रॉली यहाँ होगी तो अलग डायरेक्शन होगी करंट की, क्योंकि ट्रॉली दूर जा रही है कॉइल से. ठीक है, तो पहले तो हमने लिख दिया कि ओके व्हेन
when it's moving from right to left, there will be deflection. But जब हमारे पास जो ट्रॉली वो इस तरफ आ जाएगी तो डिफ्लेक्शन किस तरह चेंज होगी? डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है. फिर मैं लिख देती हूँ कि पहले मैंने लिखा है डिफ्लेक्शन, फिर मैं लिख दूँगी देन रिवर्स डिफ्लेक्शन ड्यू टू change in current's direction. वैसे आपको ये वाला पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने लिख दिया है समझाने के लिए. ठीक है. The trolley is now released from point B. ठीक है, point B यहाँ पर है, so that it runs through the coil from right to left again. State what is observed in the galvanometer and why it is different to your answer in A1. ठीक है. अब ये क्या बोल रहा है कि पहले तो कोयल यहाँ से A से छोड़ा हुआ था तो यहाँ आ रहा था, अब ये B से छोड़ा हुआ है और यहाँ आ रहा है. दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि डिफ्लेक्शन जो हो रही है, ठीक है, वो बड़ी होगी. इट विल बी अ लार्जर फॉर्म ऑफ डिफ्लेक्शन. वाई? बिकॉज क्या हो रहा है कि ये जो ट्रॉली 20 से आ रही है, ठीक है, ट्रॉली 20 से आ रही है, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना, बिकॉज वो ऊपर से आ रही है और एक्सेलरेशन होगी ग्रेविटी की वजह से, तो स्पीड ज़्यादा होगी. तो हमें एक स्ट्रॉन्गर करंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा इसके अंदर. ठीक है, स्ट्रॉन्गर करंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा. यहाँ पे आ रहा है 20 से, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी. ठीक है, स्पीड ज़्यादा होगी तो उसकी जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका चेंज भी ज़्यादा होगा. तो यहाँ पर EMF भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और करंट जो प्रोड्यूस होगा वो भी ज़्यादा होगा, तो रिपल्जन भी ज़्यादा होगी. तो जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा बड़ी होगी. there will be a larger deflection in the galvanometer, as the magnet will be moving with a higher speed, will therefore be producing a larger change in the magnetic field around the coil, which therefore induces a larger EMF in the coil and a larger current in the coil, which in turn pushes away the magnet even more. High repulsion. I know this is kind of confusing. समझा के I think मैं खुद confused हो गई, but नहीं, कोई बात, चलें लिखते हैं. State what is observed in the galvanometer and explain why it is different to your answer. Is that the deflection will be larger, and the reason for that is that the magnet is traveling at a higher speed, which in turn means larger rate of change of magnetic field in the coil. ठीक है? And we're done with this question. No, we're not done with this question. Figure 7.2 shows an extension. Figure 7.2 shows an extension lead used to supply power to a 3 kilowatt electric heater on a cool evening. ठीक है? State and explain 3 dangers with this arrangement. पहले तो हम इस arrangement को देख लेते हैं, and then we'll talk about the dangers. This is the 3 kilowatt electric heater placed on this paved area. Then we have the plug and socket, which is lying down on the grass, and the grass is damp. There's a cut in the outer insulation. The extension lead is designed for use for a 25 volt lamp, and over here we have a 3000 kilovolt electric heater. So ये 3 हमें problems नजर आ गई. पहले तो insulation में cut लगा हुआ है, ऊपर से the plug and socket is lying down on the grass, which is damp, which is another problem. Third, the extension lead is designed for a 25 watt lamp, and we're using a 3000 watt electric heater. So the dangers, we're going to write them down. Okay, first of all, because यहाँ पर क्या है, जो it's meant, the extension lead is meant for 25 watt lamp, right? But we're using it on 3000. So we're going to write down that it's going to cause
overheating in the extension lead because of what? Because we're using a very high power. Due to high power of heater. एक और चीज़ क्या होगी? शॉक या इलेक्ट्रोक्यूशन. शॉक या तो फिर इलेक्ट्रोक्यूशन ड्यू टू कट इन इंसुलेशन. तीसरा, इंसुलेशन में कट भी है और ऊपर से वो डैम्प ग्रास पे है, तो उसकी वजह से भी शॉक और इंसुलेशन होगा. इंसुलेशन ही इलेक्ट्रोक्यूशन. शॉक या इलेक्ट्रोक्यूशन ड्यू टू बीइंग प्लेस्ड ऑन damp grass with a cut in insulation. Not cut in insulation. ठीक है, अब ये क्वेश्चन खत्म हुआ. Now, question number 8. A wire of length 2 meters and cross-sectional area of 0.4 millimeters square has a resistance of 0.14 ohms. Calculate the resistance of another wire of the same material of length 3 meters and the cross-sectional area is 0.9 millimeters square. अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हमारे पास दो वायर हैं और वो सेम मटेरियल के हैं, सेम मटेरियल है, तो क्या होगा? उसमें सेम रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी. ठीक है, सेम रेजिस्टिविटी क्योंकि मटेरियल तो एक ही है. रेजिस्टिविटी, ठीक है, दोनों की एक ही होगी. तो अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताती हूँ. पहला, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, दोनों में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया. दोनों में हम ये यूज़ करेंगे. ठीक है, पहले तो हम रेजिस्टिविटी को सेपरेट कर लेते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया अपॉन लेंथ. ठीक है, तो हम पहले रेजिस्टिविटी निकालेंगे वायर की रेजिस्टेंट एरिया और लेंथ यूज़ करके. फिर जो यही वाला वायर होगा उसमें लेंथ और एरिया चेंज हो रहा है तो उसकी हमें रेजिस्टेंस निकालनी होगी और रेजिस्टिविटी हमें पता होगी तो हम उस तरह निकालेंगे. मैं आपको बताती हूँ. पहले फर्स्ट तरीका, ठीक है, रेजिस्टिविटी पहले हम निकालेंगे इस वायर की, विच इज़ रेजिस्टेंस क्या है 0.14 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी है 2 मीटर्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया है 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर है ना. तो अगर मिलीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में करना हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶. ये क्या हो रहा है? अगर आपको नहीं पता कि ये मैंने क्यों लिखा है इस तरह, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ इन एन एक्सप्लेनेशन. वी हैज़ डन मच डैमेज कैचिंग मी. अब ये एक हमारे पास मैं एक्रोनिम यूज़ करती हूँ. के से आप कोई भी नाम बोल सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आई यूज़ द नेम केली बिकॉज आई लर्न अबाउट दिस व्हेन आई वाज इन प्राइमरी स्कूल. ठीक है, सो केली हैज़ डन मच डैमेज कैचिंग मी. आई यूज़ दिस. ठीक है, एंड यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा मिलीमीटर एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा मीटर, यहाँ पर हमारे पास होगा किलोमीटर. कुछ भी हो सकता है, मिलीग्राम्स, फिर यहाँ पर ग्राम्स, मिलीग्राम्स और किलोग्राम. दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है, आप ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो. अब सिंस यहाँ पर हमारे पास मिलीमीटर और मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर जैसे 10 आ गया, 10. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर है और हमें उसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा 10⁻², 10⁻², 10⁻². इन सबको अगर हम बेसिकली मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो बन जाएगा 10⁻⁶. अब अगर क्योंकि हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं तो बन जाएगा 10⁻⁻⁶. सही है. सो ठीक है, 10⁻⁻⁶. इससे हमारी क्या आ जाएगी, रेजिस्टिविटी आ जाएगी. ठीक है,
फिर हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी मैं निकाल लूँगी, मैं कुछ बता रही हूँ, इसका आंसर कुछ समथिंग आएगा, इंटू 10⁻⁸ समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम इसको यूज़ करके हम क्या करेंगे कि हम दूसरे वायर की रेजिस्टेंस निकालेंगे। फिर हम किस तरह रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी जो हमने यहाँ पर निकाली हुई है, हम वो ही यूज़ करेंगे, रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी दी हुई है यहाँ पर 3 मीटर, और एरिया कितना दिया हुआ है 0.9 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो इससे आपकी रेजिस्टेंस निकल जाएगी दूसरा वायर की। एक और तरीका ये है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों वायर का सेम मटेरियल, तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, तो हम ये करेंगे इस फॉर्मूला को यूज़ करके, R1A1 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू R2A2 अपॉन L2, क्योंकि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है तो हम इक्वेट कर देंगे। तो R1 क्या था हमारे पास, R1 था हमारे पास 0.14 ओम्स मल्टीप्लाइड बाई एरिया क्या था 0.4, इसमें हम 0.4 यूज़ करेंगे क्योंकि मैं बताती हूँ, चलो मैं लिख देती हूँ 10⁻⁶, ठीक है, अपॉन लेंथ क्या है 2 मीटर्स इज इक्वल्स टू, अब नई रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, है ना, मल्टीप्लाइड बाय इसमें क्या आ रहा है हमारे पास लेंथ, सॉरी इसमें क्या आ रहा है हमारे पास एरिया 0.9 इंटू 10⁻⁶। देखिए दोनों जगह -6 आया तो हम कैंसिल आउट ही कर देंगे, ठीक है, अपॉन क्या आ रहा है यहाँ पर, सॉरी लेंथ क्या है यहाँ पर 3 मीटर्स। तो ये यूज़ करके हम जो ये रेजिस्टेंस नई वाली है ये हम निकाल लेंगे। तो दोनों में रेजिस्टेंस का आंसर हमारे पास यहाँ पर आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 0.093 ओम्स, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट यहाँ पर बेसिकली इस तरह करेंगे, क्या इसको निकालने के लिए वी विल डू 0.14 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर 3 को उस तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 और फिर ऊपर से 4 भी आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर ऑब्वियसली 4 है इधर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख देंगे क्योंकि दोनों यहाँ पर 0 पॉइंट है ना, तो 4 लिख दें तो मसला नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 2 है और 9 यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9। ये मार्किंग स्कीम में लिखा है तो तभी मैं इसको एक्सप्लेन करी हूँ कि हम ये यूज़ करके इस पर किस तरह आ सकते हैं, अगर आप मार्किंग स्कीम के थ्रू भी देख रहे हैं। तो ये हमारे पास 2 तरीके आ गए, ऊपर वाला एक तरीका, नीचे वाला दूसरा तरीका, दोनों में आपको सेम आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास लॉजिक गेट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट इज डिज़ाइनिंग एन इलेक्ट्रिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, फिगर 8.1 शोज अ पार्टली कंप्लीटेड डिज़ाइन, ठीक है। तो बस जो ऊपर हमारे पास एक नॉर गेट है और एक एंड गेट है, मैंने इसके यहाँ पर ट्रू टेबल्स यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिए यहाँ पर, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो उससे हम हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि समझ आ जाए, सही है। अब क्या है हमारे पास ए है और बी है, लेट मी जस्ट मेक दिस ईजियर कि ए पहले तो यहाँ जा रहा है, रुके लेट मी जस्ट मेक दिस फैट, ये ए यहाँ आ रहा है, उसके बाद ए जो ना डी में किस या नीचे वाले में भी इस तरह आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास है बी इस तरह आ रहा है और इस तरह आ रहा है, ठीक है, मतलब दोनों के इनपुट्स सेम आ रहे हैं। मैं इसको लेबल कर देती हूँ, ठीक है, मैं इसको लेबल कर देती हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये बहुत मोटा है, सॉरी, ये 1 है एंड दिस इज़ 2, they both have the same inputs, A and B are both the inputs of 1 and 2, ठीक है। So let's start with, if the input A is 1 and input B is whatever, the output is C. अगर we're talking about the NOR gate, ठीक है, आउटपुट अगर 0 है और एक इनपुट 1 है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा या तो फिर 1 होगा या तो फिर 0 होगा, ठीक है, दूसरा या तो फिर 1 होगा या तो फिर 0 होगा। लेकिन अगर हम चाह रहे कि पॉइंट डी भी 0 हो, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है, लेट मी जस्ट जूम इन, ये आपको टेबल्स पता होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि दोनों का आउटपुट 0 हो, ठीक है, 0 0 0 0 0 और एक जगह हमारे पास 1 हो, ठीक है, एक जगह 1 हो, तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए,
यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक जगह 1 है, यहाँ पर भी एक जगह 1 है, यहाँ पर भी एक जगह 1 है। सो नॉर गेट में 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। देखें, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, जो हमें आउटपुट बेसिकली 0 की ही दे रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द एंड गेट। जहाँ पर भी हमारे पास एक 1 है, ठीक है, यहाँ पर दोनों में 1 है, तो साथ में सिर्फ 0 होगा तो 0 आएगा। ठीक है, 0 0 में 0 आ रहा है और 0 1 में 0 आ रहा है। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 0 के थ्रू हमारे पास 0 आ रहा है और इस वाले में 0 और 1 के थ्रू हमारे पास 0 आ रहा है, तो हम 0 चूज़ करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों में आउटपुट 0 हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। ठीक है, सॉरी, सेकंड वाला है कि इसका इनपुट 0 है और हम वापस से चाहते हैं कि दोनों का आउटपुट 0 हो। हम वापस से चाहते हैं कि C और D दोनों आउटपुट दोनों का 0 हो। तो 0 प्लस व्हाट वो गिव अस 0 इन बोथ। मैं प्लस बोली हूँ जिसे आपको इमेजिन करवाने के लिए, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, वापस से करेंगे। हमें चाहिए आउटपुट 0, दोनों का 0 चाहिए हमें, और इनपुट 1 हमारे पास 0 है। ठीक है, इनपुट 1 हमारे पास 0 है। अब क्या चीज़ होगी कि दोनों में आउटपुट हमारे पास 0 हो। फर्स्ट जैसे कहते हैं एंड गेट। एंड गेट में 0 और 1 दोनों से आउटपुट 0 आ रहा है, लेकिन नॉर गेट में हमारे पास 0 के साथ सिर्फ 1 है जिसके थ्रू हमारे पास आउटपुट 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब आउटपुट आ रहा है हमारे पास 0 और 1 और इनपुट है हमारे पास 1। ठीक है, इनपुट हमारे पास A का है 1 और आउटपुट हम चाह रहे हैं कि हो, पहले C का देख लेते हैं। ठीक है, C का है 0 और D का है 1। लेट मी जस्ट, अच्छा मैं इसको इरेज करती हूँ पहले वापस से, सही ना, लेट मी गेट द हाइलाइट अगेन। ठीक है, C किसका आउटपुट है? C आउटपुट है हमारे पास नॉर गेट का। ठीक है, और D आउटपुट है हमारे पास एंड गेट का। C आउटपुट है नॉर गेट का, C में हमें चाहिए 0। C में जो नॉर गेट है उसमें हमें चाहिए आउटपुट 0, तो मैं यहाँ पर 0 को हाईलाइट कर देती हूँ। और जो D है वो आउटपुट है एंड गेट का, उसमें हमें चाहिए यहाँ पर 1, तो मैं इसमें 1 को हाईलाइट कर देती हूँ। अब आपको नज़र आ रहा है कि जो एंड गेट है उसमें एक ही 1 है और उसमें दोनों में 1 यूज़ हो रहा है, दोनों में 1 है, तो चाहिए हमें चाहिए कि दोनों में 1 हो, तो इस तरफ भी 1 ही आना चाहिए। हाँ कि नहीं, 1 ही आएगा क्योंकि सिर्फ 1 1 हमें आउटपुट दे रहा है एंड गेट का। एंड गेट का आउटपुट 1 अगर है तो दोनों इनपुट में 1 1 होना चाहिए। सो हमें नॉर गेट को देखना भी नहीं पड़ा, पॉइंट C को देखना भी नहीं पड़ा, लेकिन अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि इसके 0 में 1 1 में 0 आ रहा है डेफिनेटली, तो मसला नहीं है। अब देखते हैं, अगर हमें C विच इज़ द आउटपुट ऑफ नॉर गेट, उसमें हमें चाहिए 1। लेट मी जस्ट इरेज दिस। इसमें हमें चाहिए 1, तो आपको नज़र आ रहा है कि इसका इनपुट तो 0 0 है, तो चाहे D का जो भी आउटपुट हो और जो भी इनपुट हो इसका आएगा 0 ही, बिकॉज दोनों एक साथ ही इन्फ्लुएंस्ड हैं। ठीक है, सो दिस इज़ डन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑन कॉलम, क्या लिखा हुआ है द सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ऑन कॉलम O, ठीक है, विच इज़ द आउटपुट in the truth table shows the desired output values for the circuit. On fig 8.1, complete the circuit to achieve these output values. Label any gate used. सही। अब इसमें क्या करना है, हमें दिखाया जा रहा है कि C और D which will be the input of something existing here, जिसका output will be output O. तो कौन सा है जिसमें अगर इनपुट हमारे पास 0 0 हो तो आउटपुट 1 होगा। पहले तो हमारे पास नॉर गेट भी है जिसका इनपुट अगर 0 0 हो तो आउटपुट 1 होगा। अब दोनों में यहाँ पर इनपुट 0 0 1 है, ठीक है, और 1 0 में हमारे पास होगा यहाँ पर 0, तो यहाँ पर वापस हम देख रहे हैं 1 0 में हमारे पास आउटपुट होगा 0, और 0 1 में भी ऑब्वियसली 0 1 में भी होगा 0। तो आंसर क्या होगा, हम नॉर गेट लिख देंगे। ठीक है, आप और गेट भी लिख सकते हैं,
ठीक है, नॉर गेट लिख सकते हैं, और गेट लिख सकते हैं, और गेट का भी एग्जैक्ट यही है सही। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वेट यू हैव टू ड्रॉ इट राइट। तो आप बेसिकली नॉर गेट लिखते हैं, ठीक है सही। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। although you know what a NOR gate looks like. Sorry, I am drawing really badly today. That looks really funny. Anyways, ये हमारे पास आ गया NOR gate, ठीक है। ये हमने NOR gate ड्रॉ कर लिया। अगर आप चाहें तो आप इसमें एक और कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, दैट इज़ OR gate followed by a NOT gate। OR gate और NOT gate में भी आपको यही बेसिकली आउटपुट मिलेगा इनपुट्स से, इन दोनों इनपुट्स से ये एग्जैक्ट आउटपुट। तो नॉर प्लस नॉट, पॉट लिख रही हूँ मैं, वाह नॉट, ठीक है। या तो फिर ऑब्वियसली जो हमने ऊपर लिखा हुआ है नॉर गेट, ठीक है। ये मैंने और लिखा हुआ है, क्या हो रहा है मेरे साथ, सॉरी। और गेट प्लस नॉट गेट या तो फिर नॉर गेट, मैंने ऊपर नॉर गेट बनाया हुआ है, सही है। ये हो गया। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है, एक चार्ज के अराउंड, और उस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो उसमें दूसरा चार्ज एक अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं रीजन अराउंड अ चार्ज। ये लिखना ज़रूरी नहीं है बिकॉज ये कंडक्टर के अराउंड भी हो सकता है, ये वो, ठीक है। मैं बस लिख देती हूँ रीजन वेयर एन इलेक्ट्रिक चार्ज experiences a force। जिसमें आप लिख सकते हैं अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन या रिपल्शन, जो भी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। Figure 9.1 shows two parallel conducting plates connected to a battery। obviously ये बैटरी की पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव। और figure 9.1 draw 5 lines to show the electric field pattern between the two plates। अब obviously क्या होगा कि ये प्लेट क्या होगी, ये प्लेट होगी पॉजिटिव और जो नीचे वाली दूसरी वाली प्लेट होगी वो होगी नेगेटिव। तो हमें क्या ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाती है, बिकॉज दे आर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट विल बी अप्लाइड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे किस तरफ फोर्स अप्लाई की जाएगी, टूवर्ड्स द नेगेटिव, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ 5 लाइन्स टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑब्वियसली। तो मैं क्या करते हैं, मैं लिख देती हूँ कि मैं बनाती रुको, मैं आपको पहले ड्रॉ करती हूँ फिर एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, अब इस तरह भी लिख सकते हैं, तो फिर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी एरो बना सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। मैं उस तरह भी कर सकते हैं, कहीं भी बना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या कहते हैं, हम मार्किंग स्कीम पढ़ती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स की है तो मैं मार्किंग स्कीम पढ़ लेती हूँ, ठीक है। पहले तो लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 एरो टू द फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, एंड नो एरो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ये हमने किया हुआ है ऑब्वियसली, ये हमने ठीक है। दूसरी चीज़, the criteria must be met, 5 lines both ends within 2 millimeters of plates by eye। obviously हमने यहाँ पर कम स्पेस छोड़ा हुआ है दोनों तरफ, ठीक है। और middle 3 lines straight and within 10 degrees of horizontal by eye, ठीक है। तो हमने यही किया हुआ, दोनों मिडल की तीनों लाइन स्ट्रेट हैं, ठीक है। टॉप बॉटम लाइन स्ट्रेट और with outward smooth curves vertically ending, ठीक है। तो देखें इसमें लिखा हुआ है और, ठीक है,
स्ट्रेट लाइंस हो सकती हैं, टॉप और बॉटम की जो आउटवर्ड्स हैं वो स्ट्रेट हो सकती हैं, या तो फिर आउटवर्ड स्मूथ कर्व हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैंने तो यहाँ पर स्ट्रेट ड्रॉ की हुई है, लेकिन अगर आपको आउटवर्ड स्मूथ कर्व पर ड्रॉ करना है तो आप इस तरह करने के जैसे यूँ करके भी कर सकते हैं. सही. अगर आप ये दो लाइंस बनाएंगे तो फिर आपको ये दो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. समझ आई. बट मैंने ये नहीं ड्रॉ की थी, मैंने इस तरह ड्रॉ कर दिया. अब क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की हैं तो मैंने इनको यहाँ ड्रॉ किया. आप देखें मैंने एंड पे नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि एंड पे जो फील्ड होती है वो होती ही इस तरह से फ्रिंज्ड है. एंड की जो फील्ड होती है वो फ्रिंज होती है, तभी मैंने अंदर यहाँ ड्रॉ किया है. अगर आपको एंड पे ड्रॉ करना है तो फिर आप एंड पे तो आप इस तरह ही ड्रॉ करेंगे. समझ आए. और आपको ऑब्वियसली स्पेसिंग रखनी है लाइंस के बिटवीन. उसमें मेजरमेंट्स दी हुई है इन बिटवीन 7 मिलीमीटर्स एंड 23 मिलीमीटर्स. Someone's kid is dying anyways. तो हमने ये 5 लाइंस ड्रॉ कर ली. सही. When fully charged, a 1.2 volt rechargeable battery can deliver a current of 210 milliamperes for 10 hours. Calculate the charge that can be delivered by the fully charged battery. अब पहले हमें बताया हुआ है कि एक रिचार्जेबल बैटरी है 12 वोल्ट्स की, वो 10 आवर्स तक 210 मिली एम्पियर्स करंट प्रोवाइड कर सकती है. अब हमें चार्ज का बताना है. चार्ज हम किस तरह निकालते हैं. फॉर्मूला हमारे पास होता है Q = I/T. ठीक है. अब हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास करंट भी है, तो हमें बस चार्ज निकालना है. और चार्ज हम निकालेंगे ऑब्वियसली. I क्या है हमारे पास. I हमारे पास 210 मिली है ना, तो हम कर लेते हैं मिली एम्पियर्स होता है. ऑब्वियसली हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय 10 मतलब हम मिली होता है ना 10⁻³ होता है. ठीक है. तो ये हो जाएगा 0.21 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है हमारे पास 10 आवर्स हैं, लेकिन क्योंकि हमें टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड्स, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 60/60. तो आप ये भी कर सकते हैं बाय 3600. ठीक है. बट मैंने बाय 60 कर दिया. ठीक. तो आंसर आ रहा है चार्ज का 7600 कूलम्स. Calculate the energy stored in the battery when fully charged. अब एनर्जी हम किस तरह निकालते हैं. एनर्जी का फॉर्मूला पता है E = VQ. ठीक है. तो वोल्टेज हमारे पास है 1.2 वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज विच इज़ 7600. या तो फिर ऊपर एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर 7560 आया था, बट मैंने सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हर जगह 2SF दिए हुए हैं, तो तभी मैंने यहाँ पर भी आंसर 2SF में लिखा. लेकिन आंसर एक्चुअली 7560 था, तो हम यहाँ पर 7560 ही यूज़ करेंगे. और इस पर हमारे पास आंसर आ रहा है, वापस मैं 2SF में लिख रही हूँ 9100 joules, which is the unit of energy. State the type of energy stored when the battery is charged. ये आपको पता होता है कि जब बैटरी के अंदर हमारे पास ऑब्वियसली क्योंकि वो नज़र नहीं आ रही तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, एंड सिंस इट्स अ बैटरी इट्स केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. सो केमिकल potential energy. सही. ये क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज आई थिंक आवर लास्ट क्वेश्चन. हाँ. द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज अ प्रोटॉन. उसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन ही होता है. द मास ऑफ प्रोटॉन इज m and the size of the charge on a proton is E. Complete table 10.1. Express your answers in terms of m and E. ठीक है. हमें सारे आंसर्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ M and E. 3 spaces have already been completed. ठीक है. अब प्रोटॉन का हमें पता है मास ऑब्वियसली M दिया हुआ है और चार्ज E दी हुई है, तो न्यूट्रॉन का मास M ही होगा क्योंकि प्रोटॉन से सिमिलर होता है, लेकिन चार्ज उसके ऊपर कुछ नहीं होगा. तो उसके ऊपर हम चार्ज बेसिकली 0 होगा यहाँ पर. अब गैमा रेज़ का कोई मास नहीं होता क्योंकि वो रेज़ होती हैं. ठीक है. तो उसमें मास भी 0 होगा और चार्ज भी 0 होगा. फिर हमारे पास आया ये है अल्फ़ा एमिशंस. ये तो फिर अल्फ़ा एमिशंस क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है. ठीक है. एक ही चीज़ होती है. इसमें हमारे पास 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स. तो उसका मास क्या बनेगा 4m, क्योंकि प्रोटॉन्स भी 2 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं और दोनों का मास m है. और चार्ज हमारे पास उस साथ होता है इसका +2. तो जो प्रोटॉन का चार्ज होगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो 2 चार्ज होगा ना प्रोटॉन का, प्लस 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 प्लस. ठीक है.
मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा बोल दिया, बट प्लस प्लस होगा क्योंकि 2 प्रोटॉन होंगे, तो हो जाएगा 2e। सही। फिर क्या लिखा हुआ है, many schools and colleges use radioactive isotopes for teaching and research. Describe how these radioactive isotopes are handled, used and stored in a safe way. अब आपको पता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में से रेडिएशंस तो एमिट होंगी ही होंगी, तो इनको पहले तो हमें पता होता है कि हम किस तरीके की प्रिकॉशंस लेते हैं। पहले तो हम अपनी बात करते हैं कि हम अपने आप को किस तरह प्रिकॉशन लेते हैं। हम पहले तो वी और ये तो फिर दे, ठीक है, यूज़ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ठीक है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होती है। उसके साथ साथ क्या होता है, वी डो नॉट टच इट, राइट, वी हैंडल द सोर्स यूजिंग टूल्स, बता भी लिख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट, या तो फिर यूज़ ऑफ टोंग्स, ठीक है। टोंग्स आपको पता है ना क्या होता है, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, चिमटा बोलते हैं आई थिंक, हाँ। एंड फिर हम क्या बोलेंगे कि हम एक्सपोजर को मिनिमाइज़ करेंगे डिस्टेंस यूज़ करके, हम शील्डेड स्टोरेज यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लेड में प्लेस किया जाता है, लेड के बॉक्स में प्लेस किया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली लेड स्टॉप्स इवन गामा एमिशंस विच इज़ यू नो ऑब्वियसली द मोस्ट पेनिट्रेबल टाइप ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि क्या लिखना था, हाँ, मिनिमाइज एक्सपोजर टाइम, मतलब ज़्यादा देर के लिए इस पर एक्सपोज नहीं रहना, minimize exposure time and keep a distance, alongside storing the source in a lead box, ठीक है, which prevents radiations फ्रॉम लीकिंग, ठीक है। और आपको पता है कि न्यूक्लियर वेस्ट भी होता है, तो उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं कि इट मस्ट बी वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड, वेस्ट मस्ट बी मैंने माशाल्लाह स्पेलिंग, डिस्पोज्ड इन ए सिक्योर मैनर, ठीक है। और आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि उनको यूज़ करने के लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत है और मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें आप डिटेल में जा सकते हैं कि इस तरह सिक्योर करना है, और आपको ये बताना है कि आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, एक्सीडेंट के उसमें प्रोसीजर क्या होगा वगैरह वगैरह। यू कैन राइट डाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें बहुत लंबी मार्किंग स्कीम है, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग इन दिस पेपर। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, प्लीज़ मेंशन it down in the comments and I will try my best to get back to you. Thank you so much for watching this video and I'll see you guys in the next one. Allah Hafiz.